Yes, good evening. Okay, so जैसे कि लास्ट टाइम हमने ऑसिलेशन के कुछ एमसीक्यूज किए थे स्टार्ट, तो आज के लेक्चर में भी हमको ऑसिलेशन के एमसीक्यूज कंटिन्यू करने हैं. So let us see. I think we are done with this 33rd one, right? फेज वाला जो ये है, तो ये हमने किया था लास्ट टाइम. So let us see the next part. Okay, just read this. A body of mass 1.4 kilogram is in SHM and its displacement is given by the relationship that is y is equal to 0.05 into sine 20t plus pi by 2 meter. If t is in seconds, then the maximum force acting on the particle is, it's very easy, you can do it, just because maximum force हमको निकालना है. What is the formula for maximum force? It is simply k into a, correct है? k into a, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, बराबर. अगर हम यहाँ पे k निकालने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसके लिए k के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? k के लिए फॉर्मूला है m इंटू ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है? यस. सो m इंटू ओमेगा स्क्वायर ये हमको यूज करना पड़ेगा, और m जो है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, और yes, m is given already, and omega can be found out by using this coefficient of t, करेक्ट है? तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे y is equal to a sin ओमेगा t प्लस अल्फा के साथ, तो इससे हमको क्या मिलता है? ओमेगा मिलता है 20, करेक्ट? सो वंस वी गेट दिस ओमेगा as 20, we can get the maximum force. What is the formula for maximum force? It is going to be m omega square into a, correct है? So here m is nothing but 1/4, omega is nothing but 20, उसका स्क्वायर बन गया 400, करेक्ट? And a is nothing but 0.05. Yes, and just simplify this, you'll get it as 4 ones are 4, hundreds are, and 100 multiplied by 0.05 comes out to be 5, that is in Newton. So 5 Newton will actually be the final answer. Okay, let us see the next. A body is executing SHM. If the force acting on the body is 6 Newton, when its displacement is 2 centimeter, then the force acting on the body when the displacement is 3 centimeter in Newton is, it's just a proportionality. We know that force is proportional to the displacement. So when the force is 6 Newton and displacement is 2 centimeter, so if displacement becomes 3 centimeter, what will be the force then? 9 Newton. That's it. ओके, ये सिचुएशन तो हमने ऑलरेडी देखा था थ्योरी में डिस्कस करने के टाइम. ओके, a spring of natural length 80 centimeter with a load has a length of 100 centimeter. If it is slightly pulled down and released, then its period will be. Okay, देखो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला हमको यूज करना है इधर. देखो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर है. ओके, और हैज अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर. हाँ, मतलब लोड अटैच करने के बाद उसका लेंथ कितना बनता है? 100 सेंटीमीटर बनता है. और अगर उसको थोड़ा पुल करके हम छोड़ देंगे, तो उससे उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है.
Okay. The interesting thing here is that the mass is not given actually, right? Mass नहीं दिया है इधर. Okay. तो देखो रिक्से. Suppose this is the spring. So normally उसका लेंथ कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है. 80 centimeter. This is the normal length of the spring. But when mass m is attached to it, its length becomes 100 centimeter. What does it mean? Due to this mass, the extension produced in the spring is going to be 20. Correct है? तो यहाँ पे 20 is the extension produced in the string. So what can we say? ये जो mass हम attach करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे एक force apply होगा, जो कि mg के बराबर होगा. और उसने अगर ये एक्सटेंशन x इतना एक्सटेंशन अगर प्रोड्यूस किया हुआ है, तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अगर k मान लो, तो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, ये फॉर्मूला यूज करके हमको क्या मिलने वाला है? फोर्स के बदले आ जाएगा mg, और इधर मैग्नीट्यूड में अगर देखेंगे तो माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और यहाँ पे आएगा k इंटू एक्स. तो अभी इसमें देखो लिख से x मतलब जो एक्सटेंशन ना, extension मतलब जो distance through which the spring gets stretched by application of the mass. So इसमें से m into g यहाँ पे k into x के बराबर आने वाला है, और x कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर. मतलब ये कितना हो गया? वो 0.2 मीटर हो गया. तो इससे हमको क्या मिल सकता है? देखो k मिल सकता है. Do you agree with this? So k will be actually written to be equal to mg upon 0.2. Okay. And as we know that the period of oscillation of a spring block oscillator is given by the formula 2 pi root m upon k. And if we just replace this k here, then we can get this t is equal to 2 pi root m upon k, where k is going to be mg upon 0.2 simply, so that this gets cancelled and this 0.2 just gets in the numerator, so that we get here this t is equal to 2 pi into root 0.2 upon g, where g is nothing but 10. Okay, so we can write this simplified. Okay, don't take g as 10, take it as 9.8 only, just because here if we just shift this point forward, then we can get this simplified as 2 upon 98. Correct hai? And 2 upon 98 can be reduced by 2 so as to get 1 upon 49. And as we know that this 1 upon 49 का रूट कितना होता है? 1/7 होता है. तो इससे हमको मिल जाएगा 2 pi into 1/7. That means it will be actually 2 pi by 7. If the answer is in terms of pi, then we are done with this question. No, but it is in terms of decimals. Okay, so we have to express it in terms of decimal. So let us try it out. तो अभी 2 pi by 7 का मतलब कितना होता है डेसिमल में? देखो, तो 2 pi by 7 मतलब वो बनेगा 2 into 3.14 multiplied divided by 7, which is nothing but, okay, we can also take this pi as 22 by 7, no? But it's okay. चलो यहाँ पे हमको at least approximate answer तो मिल जाएगा. It will be actually 6.28 divided by 7. That means it approximately it is 0.9. Why? Because 6 divided by 7 भी अगर करेंगे तो भी 0.9 के आसपास तो आ ही जाएगा आंसर, right? So we can select this 0.9 as a correct option. But 0.81 is also there. So just not to take the risk, we'll just find out this in decimal correctly. तो अगर 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 7 zeros are
and 62 0.89. हाँ हाँ 8 9, तो मतलब वो 0.9 के साथ ज्यादा करीब है कि नहीं, ना कि 0.81। तो 0.81 तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, सो वी कैन सिलेक्ट दिस 0.9 एज अ बेस्ट ऑप्शन। और ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है थ्योरी के अंदर। द सिंपल स्प्रिंग हैज अ लेंथ L and force constant K. It's cut into two springs of length L1 L2 such that L1 is equal to n times of L2. The force constant of the spring of length L1 is, see, we can do it easily because this is suppose the spring of length L. Okay, this is the original spring whose length is L. It's cut into two parts where the first part is having the length L1 and the second part is having the length L2. Okay, and it's given that L1 is equal to 2 times of L2, correct? So L1 is equal to, sorry, n times of L2, ये दिया हुआ है। तो अभी ये बात यूज करो यहाँ पे कि अगर इसका फोर्स कांस्टेंट K है और इसका फोर्स कांस्टेंट अगर मान लेते हैं K1 है और इसका फोर्स कांस्टेंट अगर K2 मान लिया जाए, तो ये तुमको ऑलरेडी पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड द लेंथ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। So K into L should be exactly same as K1 into L1, which should be same as K2 into L2, which gives that K1 is actually going to be equal to KL upon L1. But all as we know that this L is nothing but L1 plus L2, क्योंकि ये स्प्रिंग को कट करने से पहले ये दोनों स्प्रिंग्स जुड़े हुए थे, तो इसलिए टोटल लेंथ जो उनका है वो दोनों पार्ट्स कट पार्ट्स के लेंथ के सम के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा simply either K into L upon L1 or we can write it as K into L1 plus L2 upon L1. And if we opt or if we choose to put the value of L1 here in the numerator as well as denominator, then we can be able to get this as K into L1 के बदले आएगा N into L2 plus L2 as it is divided by L1 के बदले फिर से N into L2, so that this L2 can be taken common from both of this numerator as well as denominator, and what we are left with is K into L2 bracket में N plus 1 divided by N times of L2, so that this L2 just gets cancelled, and what we are left with is simply N plus 1 upon N into K. This is actually going to be the correct answer. So it is N plus 1 upon N into K. So it is present in this option 2 here. Just check. Okay. अगर तुमने कुछ सॉल्व किए हैं और अगर तुमको कुछ डाउट आए तो जरूर पूछो। ओके, ये करो 43 वाला। इन अ स्प्रिंग ब्लॉक और सिस्टम द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%, देन द टाइम पीरियड विल, ओके देखो फिर से यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट हमको यूज करना है। देखो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर सिस्टम के अंदर अगर हमने स्प्रिंग का लेंथ कम किया 1% से अगर रिड्यूस कर दिया तो टाइम पीरियड का क्या होगा, ये तुमको पता होगा। अभी अभी हमने ये इन्वोक किया कि द प्रोडक्ट ऑफ K and L is always constant, right? In case of a spring block oscillator, K into L always remains constant. तो अगर K into L constant है तो इसका मतलब क्या होगा, K is inversely proportional to L, right? And since L is increased या decreased by 1%, तो अगर L 1% से डिक्रीज किया जाएगा तो उससे K का क्या होगा, K will increase by the same, that is 1%, right? तो K 1% से बढ़ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, T is equal to 2 pi root m upon K, and if you keep this m constant
एंड के हियर, तो यहाँ पे के जो है, के यहाँ पे 1% से कम हो गया, तो सिंस के विल डिक्रीज बाय 1%, but it is present in the denominator and at the same time it is present in the square root sign, right? So इसका मतलब यहाँ पे फिर t जो है it will actually increase by 0.5%, क्योंकि रूट का मतलब रेस टू हाफ होता है। और ये रूल याद रखो ठीक से कि if y is proportional to x raised to n, then suppose y proportional to x raised to n है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर x increases by p%, then y will increase by n times of p%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो अच्छी तरह से याद करके रखो, it will be helpful in many questions. For example, if we have y proportional to root x, okay, y proportional to root x, and suppose x increases by 3%, so what will happen is y will increase by 3 का हाफ, क्योंकि यहाँ पे x रेस टू हाफ है ना, तो यहाँ पे n जो है वो सामने आ जाता है, मतलब यहाँ पे हाफ सामने आएगा और इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ इंटू 3 कितना बनता है 1.5, राइट? सो 1.5% से y इंक्रीज होगा। बट इफ सपोज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, and in this case if x decreases or increases by 3%, suppose, so in that case y will not increase but it will decrease in fact by the same, that is half of 3, मतलब 1.5%। तो ये परसेंटेज चेंज अगर तुमको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे, इससे हमको यहाँ पे पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि t मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k। यस, and then we can just be able to say that since k has been decreased by 1%, so t will increase by half of 1%, मतलब 0.5%। again here not to confuse between this formula, क्योंकि यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला तो है यहाँ पे ऑलरेडी, t is equal to 2 pi root m by k, ये एक फॉर्मूला है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी स्प्रिंग के बारे में प्रूव करके रखा था कि mg is always equal to kx, and hence this ratio of m by k can always be expressed as x by g, and hence the formula for period of oscillation of this spring block oscillator also can be written as 2 pi root x by g। तो यहाँ पे इस x के साथ कंफ्यूजन मत करो, x इज यहाँ पे क्या है, x इज द एक्सटेंशन, ओके, मतलब ये जो स्प्रिंग है, तो अगर समझो ये स्प्रिंग है तो इस स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ है वो अलग चीज होता है, लेकिन एक मास अटैच करने की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो एक्सटेंशन यहाँ पे x कहलाता है। अगर ये और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है तो ये एक्चुअली x कहलाता है। तो ये x अलग चीज है और ये L अलग चीज है। यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 1%, ऐसा बोला है। तो ओरिजिनल लेंथ है उसका 1% से हमने कम कर दिया है, तो उससे उसका पीरियड पहले फोर्स कांस्टेंट बदलेगा और वो फोर्स कांस्टेंट बदलने की वजह से उसका टाइम पीरियड बदलेगा। एक्सटेंशन नहीं किया जा रहा है स्प्रिंग के अंदर कैथोडिक से, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर, t increases by 0.5%, मतलब t will increase by 0.5%, so 2 will be here the correct option। okay, 44 वाला भी करो, it's very interesting। a ball of mass 2 kilogram from a spring oscillates with a period 2 pi seconds। okay, the ball is removed when it is in the equilibrium position। okay, then the spring shortens by। okay, तो मतलब अगर स्प्रिंग शॉर्टन्स बाय, क्योंकि बॉल जब था उसके ऊपर अटैच्ड 2 किलोग्राम का, तब तक वो स्प्रिंग जो है वो 2 पाई इतने पीरियड के साथ, 2 पाई सेकंड इतने पीरियड के साथ ऑसिलेट हो रहा था।
उससे हमको स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मिल जाएगा। ओके, और जब जैसे हमको फोर्स कांस्टेंट मिल जाएगा तो उसके बाद हम स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। देखो ठीक से। अच्छा, एक एक मुझे आपसे छोटी बात एक करनी थी, मतलब पता करनी थी। ये आपको मतलब एक बार क्वेश्चन दिख रहा है और उसके बाद फिर वापस बोर्ड दिख रहा है, फिर वापस क्वेश्चन दिख रहा है या वापस बोर्ड दिख रहा है, तो ये आपके लिए सुटेबल है या क्वेश्चन और सॉल्यूशन उसका एट अ टाइम दिखना जरूरी है? मतलब समझ रहे हो क्या क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये अभी यहाँ पे तुमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जब बोर्ड दिख रहा है तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, राइट? और जब क्वेश्चन दिख रहा है तो बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो इज इट ओके? और यू शुड गेट क्वेश्चन एज वेल एज बोर्ड एट द सेम टाइम? ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। यस, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे तुमको क्वेश्चन भी दिख रहा है और बोर्ड भी सामने दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी पढ़ो एक बार ठीक से क्वेश्चन फिर से। देखो, the ball of mass 2 kilogram from the spring oscillates with a time period of 2 pi seconds. Ball is removed when it is in the equilibrium position, then the spring shortens by. ओके, तो देखो सपोज ये स्प्रिंग है, सॉरी, हाँ स्टार्टिंग में तो है उसके साथ ब्लॉक अटैच्ड, राइट? ओके, स्टार्टिंग में ये ब्लॉक अटैच्ड किया हुआ है उसके साथ, तो और वो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, राइट? और उसकी वजह से उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई सेकेंड्स के बराबर बनता है। सो टाइम पीरियड इज गिवन टू बी 2 पाई सेकेंड्स व्हेन द ब्लॉक इज अटैच्ड। बट नाउ व्हेन दिस ब्लॉक विल बी रिमूव्ड, व्हाट विल हैपन इज दिस स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, राइट? सो कितने डिस्टेंस से ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, ये हमको ढूंढ के निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस x हियर। इसको ही तो x बोलते हैं ना हम, जो हमारा फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। ये फॉर्मूला के अंदर हम ये यूज करते हैं कि जब हम ब्लॉक अटैच करते हैं, ओके सॉरी, तो बेसिकली जब हम ब्लॉक अटैच करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये mg इतना फोर्स स्प्रिंग के ऊपर काम करता है जो कि k इंटू एक्स के बराबर हुआ करता है। और इससे हम रेशियो निकाल सकते हैं m अपॉन k इज गोइंग टू बी इक्वल टू x अपॉन g, राइट? और इससे हमको और एक फॉर्मूला मिलता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, जो कि t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट एक्स अपॉन जी, करेक्ट है? अभी ये सोचो कि अगर हमने ये ब्लॉक उठा दिया, इसमें से ब्लॉक अगर हटा दिया, तो जिस डिस्टेंस से ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा या शॉर्टन होगा, वही तो डिस्टेंस x है ना। तो मतलब सिर्फ उन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, थोड़ा अलग ढंग से पूछा है, बट एक्चुअली हमको निकालना क्या है, यहाँ पे x ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को, नॉर्मल स्प्रिंग को जब हम m इतना मास का ब्लॉक अटैच कर देते हैं तो उसकी वजह से वो
एक्सटेंड हो जाता है, एक्स डिस्टेंस से एक्सटेंड हो जाता है, और वो एक्स डिस्टेंस भी अगर हमको पता चल गया तो भी उससे हमको ये पीरियड मिल जाता है, राइट। जी तो हमको ऑलरेडी पता ही है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ उल्टा करना है, हमको पीरियड ऑलरेडी पता है और उससे हमको ये एक्स निकाल के दिखाना है। सो लेट अस डू दैट। टी के बदले डाल दो 2 पाई is equal to 2 pi into root x upon g, where g is nothing but 10. So here 2 pi gets cancelled, and if we square both sides, so 1 equal to x upon 10 दिया हुआ है, और अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें देगा 1 equal to x by 10, which gives x equal to 10 or just 9.8. If you would have taken this as 9.8, then we would have gotten it as 9.8 only. So x will be actually be equal to 9.8, which is the value of g only. So the answer is going to be g meters here. So 1 is the correct answer. Forty-eight वाला करो. Question number 48. Just read. The amplitude of particle in a system is 0.2 meter. The potential energy and kinetic energy of this particle 0.1 second after passing the mean position are equal. Then the period of oscillation is. Okay. तो एक बात समझ लो यहाँ पे ठीक से कि when the potential energy and kinetic energy become equal, can you guess? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, करेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी इन दोनों को इक्वल होने के लिए इस x स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा, जो होगा तब जब 2x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर के बराबर होगा, जो होगा तब जब x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर बाय 2, मतलब ही x का वैल्यू प्लस और माइनस a बाय रूट 2 के बराबर होगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब दिस इज द डिस्टेंस एट विच द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 0.2 मीटर एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 0.1 सेकेंड आफ्टर द पासिंग थ्रू मीन पोजिशन आर इक्वल, करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जब x डिस्टेंस ये होता है तो उस समय अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उस समय का टाइम क्या होगा, वो टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। सो कैन यू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल फ्रॉम दैट। सो उससे हमको ओमेगा मिल सकता है, देखो कैसे, क्योंकि x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू फॉर्मूला है a sin ओमेगा t, करेक्ट है। and since this x is given to be a by root 2 here, we can just find out value of omega t from that and put this t here and get omega from that. So see, so x के बदले हमने डाल दिया a by root 2 जो इक्वल टू a sin ओमेगा t है, जिससे हमको मिल रहा है यहाँ पे a कैंसिल and sin omega t equal to 1 by root 2 gives omega t should be equal to pi by 4, correct है। and since omega t is equal to pi by 4 and omega is actually 2 pi by t, करेक्ट। सो इससे हमको क्या मिल रहा है 2 pi by t into small t is actually going to be pi by 4, जिससे हमको मिल रहा है pi pi cancel और t becomes equal to t by कैपिटल T by 8। यस, ये तो हमको ऑलरेडी वैसे भी पता था, लेकिन T by 8 हमने निकाला था ऑलरेडी, याद है ना। तो अगर यहाँ पे t के बदले अगर डाल दो उसका वैल्यू 0.1 सेकेंड के बाद ये होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे t के बदले आएगा 0.1 which is going to be equal to t by 8। so अगर t by 8 equals to 0.1 है तो t must be equal to what, 0.8। that's it, that is going to be the period of oscillation। okay, देखो इवन ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास, याद होगा आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द टाइम, टाइम इंस्टेंट के फॉर्म में एक फॉर्मूला है जो हमने देखा था लास्ट टाइम। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ
k a square into sin square ओमेगा t, और काइनेटिक एनर्जी का बनता है हाफ के ए स्क्वायर अगेन इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एंड चलो ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय ई, मतलब टोटल एनर्जी, नो डाउट। बट इफ यू जस्ट इक्वेट दिस यू एंड के हियर, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ये हाफ के ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिंपली सिंपली साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये बचेगा। And if this happens at 0.1 seconds, that means अच्छा ये sin square omega t equal to cos square omega t का मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि साइन और कॉस के वैल्यूज सेम कब बनते हैं, 45 पे ही बनते हैं। इसलिए यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 4, एंड वंस वी गेट ओमेगा टी एज पाई बाय 4, वी कैन जस्ट पुट t here as 0.1 and get that 2 pi by capital T into 0.1 equal to pi by 4, so that this pi gets cancelled and we are left with t is going to be equal to 0.8. okay, तो ऐसा भी हमको मिल सकता है आराम से। चलो 49 वाला भी करो फटाफट। The amplitude of oscillation of the particle in a system is √3 centimeter. Okay, amplitude √3 दिया हुआ है। The displacement from the mean position at which the potential energy and kinetic energies are in the ratio 1:2 is, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1:2 रेशियो में होने चाहिए। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढना है। इट्स ओके, अगेन द सेम थिंग, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी अगर उनका रेशियो अगर 1:2 है, इसका मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, and if their ratio is going to be 1:2, then this half k gets cancelled and we are left with this x square upon a square minus x square, left with 1:2, which gives, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x square is going to be equal to a square minus x square, right? And hence we can get that 3x square is equal to a square, which means x square must be actually equal to a square by 3, which means x must be actually equal to plus or minus a by √3, correct है? And since a itself is given to be √3 centimeter here, so अगर यहाँ पे हम उसका वैल्यू डाल देंगे तो हमको मिलेगा √3 upon √3, which is actually going to be 1. So 1 centimeter is going to be the distance, displacement, at which the kinetic energy and potential energy will be at the ratio 1:2, right? Let us start with this level 2. Okay, ये 6th वाला देखो एक बार ठीक से। Particle in SHM has a period 4 seconds. It takes time t1 to start from mean position and reach up to the half amplitude in the other case. In another case, it takes time t2 to start from extreme position and reach the half the amplitude. Okay, मतलब देखो ठीक से यहाँ पे suppose ये path of SHM है, ये mean position, okay, ये extreme position और ये left extreme position. Okay, so just read this first question. First statement is that it takes time t1 to start from mean position and reach up to the half amplitude position, मतलब a by 2 position. देखो ठीक से
यहाँ से यहाँ तक मतलब a/2 पोजीशन तक आने के लिए उसको t1 इतना टाइम लगता है, ठीक है। एंड इन अनदर केस इट टेक्स टाइम t2 टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड रीच टू हाफ हाफ एम्पलीट्यूड पोजीशन। मतलब इधर से अगर वो स्टार्ट करता है यहाँ से a से, तो इधर से इधर तक आने के लिए उसको t2 इतना टाइम लगता है, ये दिया हुआ है। और अभी हमको निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ t1 and t2। okay, so obviously we have already seen that the particle requires a time t by 12 to reach from this mean position to a/2 position, and there is another position √3/2 a position here between uh, a/2 position and extreme position, and it takes t by 12 once again here and t by 12 once again here, which adds up to, so t2 should be equal to what, t by 12 plus t by 12। that means it is going to be actually equal to 2t by 12, मतलब ये t by 6 हो गया इधर। तो ये देखो t1 का वैल्यू t by 12 के बराबर है और t2 का वैल्यू t by 6 के बराबर है। तो एट जस्ट here if we want to find out the ratio of t1 and t2, so what should be t1 is to t2 must be t by 12 divided by t by 6, मतलब ही वो कितना हो गया 6 by 12 मतलब 1/2 हो गया। that is actually going to be the correct option। let us check। yes, t1 is to t2 is going to be 1 is to 2, so 2 is going to be the correct answer। okay, just do this seventh one also on your own। a particle performs SHM with frequency 2 Hz if the time is measured from its instantaneous rest position, then the time taken by it when its displacement becomes equal to half of its amplitude is। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1/2 है, 2 हर्ट्ज है, करेक्ट है। तो इससे तुमको पीरियड कितना मिलेगा बताओ, period will be 1/2 seconds, right? Once we get the period, then from the knowledge we can see that the time taken by the particle to when its displacement becomes equal to the half of its amplitude। तो half of amplitude करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम लगता है, वो लगता है t by 12, but t itself is half, so what is half divided by t by 12, half divided by 12, it is going to be 1/24, that's it। so in this way we can get this as a correct option। okay, so ठीक है, we should stop here। okay, the next part will continue in the next lecture।